90% of the time on this channel you see me riding or doing something related to the bikes, but rest of the 10% what you don't see is actually the 90% that I usually do in my general life. Welcome to the channel. I'm Yasir, you are with Moto Zoomer. I hope you guys are awesome as always. टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, ये जो आज का प्रोजेक्ट है ना, दिस इज नॉट अ न्यू आइडिया. आई हैड दिस आइडिया सिंस द डे वन जब मेरी बाइक क्रैश हुई थी. सो स्टोरी कुछ इस प्रकार है. आई बॉट द ड्यूक 390, 700 किलोमीटर चली हुई थी बाइक. आई गेव इट टू अ फ्रेंड एंड ही क्रैश्ड इट. ऑल्दो इट वाज एन एक्सीडेंट, बट आउटकम ये हुआ कि इंश्योरेंस का क्लेम करना पड़ गया. और जब इंश्योरेंस का क्लेम करना पड़ता है तो जो भी पार्ट्स रिप्लेस होते हैं वो आपको मिल जाते हैं ताकि आप उनको स्क्रैप करा सको. दे पुट आउट सम स्क्रैप वैल्यू बट यू गेट द पार्ट्स. सो the thing you're seeing behind, it's the chassis of my Duke 390. The interesting part is that I always wanted to build a PC inside this chassis. मैंने हमेशा सोचा है कि ये कितना cool रहेगा कि एक बाइक की chassis के अंदर अपन PC build करेंगे. Starting with I was thinking कि यार रहने देते हैं, but now I think having something different for my PC system is going to be absolutely amazing. Right now I'm using a CPU, मतलब जनरल वाला CPU जनरल लोग यूज़ करते हैं, बट आपका भाई जनरल थोड़ी है, मतलब जनरल है. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वन डे बिल्ड. हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा बनाएंगे. दिस इज गोइंग टू बी अ कम्प्लीटली DIY प्रोजेक्ट एज दैट फ्रेम इज़ वेरी ट्रिकी एंड उसके अंदर कंपोनेंट्स लगाना इज गोइंग टू बी वेरी 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 ट्रिकी. कहानी कुछ ऐसी है कि हमका चाहिए एक कंप्यूटर जो कि लग जाए बाइक की शैसी के अंदर. ड्यूक 390 हैज़ बीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. चोरी भी हो गई थी बेचारी, तो अब उसको अपन को ट्रिब्यूट देना है एक छोटा सा. सो आई एम गोना मेक दिस PC ऑल्सो. सीरियस नोट पे बताऊं तो आई रियली वांट टू बिल्ड अ पीसी इनसाइड दैट केज. दैट केज लुक्स so good. We are limited with the options of putting in motherboards. If you are new to the PC building community, you have to go through the sizes. Let me give you a demonstration. This size right here is called the Mini ITX. This is the smallest form factor that you can have on a motherboard. This is a very very old board that I have. I'm just going to have this board for reference, and this is the board which is called the Micro ATX. Most commonly लोग यही बोर्ड लेते हैं क्योंकि ये मोस्टली यही बोर्ड मिलता है मार्केट में. इससे बड़े जितने ये बोर्ड आते हैं ना, फिर आते हैं वो कस्टमाइज बोर्ड्स ATX एंड BATX, पता नहीं कौन कौन से फॉर्मेट में, बट दे आर ह्यूज. ATX तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट गोना फिट इन दिस केज. लेट मी शो यू दिस केज फर्स्ट. Most probably this thing is going to have custom liquid water cooling, custom loop and all. So I just have to find out the motherboards. I'm still sorting out the components. This is a very very old motherboard that I used. I guess this is from my first PC, not the first PC, but yeah, very old motherboard. So the biggest problem with this thing is extremely heavy and I cannot modify any of the part because दिस स्ट्रक्चर इज रियली रियली स्टडी. अरे यार शैसी है बाइक की तो ऑब्वियसली ऐसा ही होगा. ये जो आप टेक्नोलॉजी का कीड़ा देख रहे हैं ये कोई नया नहीं है मेरे लिए. आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस आई वॉज अ किड, लिटिल किड. मुझे बचपन में लोग बोलते थे कबाड़ी बिकॉज आई यूज टू कैरी सो मच इलेक्ट्रॉनिक्स इन माई पॉकेट. बहुत मज़ा आता था. फर्स्टली आई हैव टू डिसाइड द कन्फिग्रेशन. मैं AMD के साथ जाऊँगा या इंटेल के साथ जाऊँगा. ऑल्सो द ग्राफिक कार्ड प्राइजेस आर एक्सट्रीमली स्काई रॉकेटिंग. दैट आई ऑल्सो हैव टू सी what I want to do with the graphic card. तो ज़्यादा बड़ा सेटअप तो नहीं होगा ये. दिस इज़ गोइंग टू बी माई एडिटिंग PC और मे बी गेमिंग, कैजुअल गेमिंग 1080p पे. बट पहले हम करेंगे थोड़ी सी रिसर्च एंड आपको एक और बात बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट सी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप तहे दिल से चैनल फॉलो कर रहे हैं, जो कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप कर ही रहे हैं. मैंने बोला था कि मैं करूँगा विंटर स्पीति, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस इट्स नॉट गोना हैपन दिस ईयर. बहुत दिल तोड़ने वाली खबर है, बट इस साल मैं नहीं जा पाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं जा पाऊँगा. मतलब इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. आई एम ट्राइंग टू डाइवर्ट माई एनर्जी टू समथिंग एल्स. ऑल्सो एज कोविड स्केयर इज देयर, ओमिक्रॉन स्केयर इज देयर, आई डोंट थिंक कि मैं जाऊँ और अगर वहाँ पे लॉकडाउन लग गया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो लेट्स सी. अभी भी 0.1% की उम्मीद है, बट दैट 0.1% की उम्मीद आई थिंक इज़ नेक्स्ट टू नथिंग. सो अपन इस पे क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं that we have to discuss. So let's go there and research for the prices, research for the platform that I'm going to use. This is not sponsored. This is a clear shout out to MD Computers. MD Computers have been one of my favorite shops. MD and Prime AVGP, both of them are great. So we're going to search
for our components. For the CPU, I have been using a 3700X Ryzen, so I'm going to go with the same. So let's type 3700X. 26,000 rupiya ka CPU. Let's add it to the cart. So we are not going to use the stock cooler. So let's search for an AIO. I have heard about this AIO, Arctic Liquid Mirage. गजब के इसकी रिव्यूज है. वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर यूजिंग इट. दिस वन इट्स 5820. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक आफ्टर द फाइनल प्राइस, नथिंग एल्स. अभी बस मैं रिव्यू कर रहा हूँ. ऑल्सो फॉर द ग्राफिक्स कार्ड आई एम गोइंग टू गो विद द 6600 XT. आई हैव रिसर्च्ड अ लॉट and 6600 XT seems to be a perfect fit for my PC. And अभी ज़्यादा it's on a discount. It's for 52,800 and this is going to be the most expensive part of my PC. This thing I'm actually doing only for the reference कि कितना प्राइस में पड़ रहा है अपन को टोटल, वो अपन देख लेते हैं. नाउ बात आती है रैम की. तो आई थिंक स्नाइपर, आई हैव बीन यूजिंग स्नाइपर X रैम फॉर अ व्हाइल नाउ. आई एम गोइंग टू चीट अ बिट. मेरे पास एक स्नाइपर X पहले से रखी हुई है, सो आई एम गोइंग टू यूज G-Skill स्नाइपर X एज माई रैम. दिस इज एन 8GB स्टिक. आई हैव अनदर 8GB inside the PC right now, so I'm going to just jank it off and use it in the other PC. For power supply, I'm going to go with the 550 watt because 550 watts are completely fine. I can also go with the Deepcool DQ750M V2L. This is a fully modular power supply and looks extremely good. Let me push my budget. We are just checking right now. So it has already crossed 90,000 rupees. 90,000 rupees without even a monitor or something else. So we have a CPU, cooler, GPU, PSU, RAM. I already have a hard drive and I also have an SSD lying around, so I'm going to use them. Now it's the time for the most important thing, which is motherboard. I want mini ITX. I want to go smaller or maybe ATX if ITX doesn't fit in our budget. ITX का budget मैं मान के चल रहा हूँ कि 10,000 के आसपास अगर मिल जाएगा तो I'm going to be super impressed. Motherboard. Let's click on motherboards and search our form factor. Firstly, let's search the socket AM4 because we are going to use Ryzen 7. And then we have to go for DDR4 and we have to go for MITX. This is going to be very tough. So this is 16,950 rupees. This is B50. This is the only option I have. Actually, I have researched this for a while and this is the only motherboard that is going to fit in my budget for such needs. Now we have to switch the motherboards to M80X. Let's see if we have something in M80X. I'll tell you the difference why I want mini ITX and why I was skipping M80X, but now I have to show you. Let me show you. This is the mini ITX board, and if I want to put this board in this frame, I can have it at a very nice location. Just have a look. I'm being rough with this board because this is just an old board, old damaged board. So it can sit on the frame like this. It'll go with the aesthetics. It'll look super nice, super nice. But if I want to put an M80X board, I have to do this. I'll show you. M80X goes like this, and जो mini ITX है, that is going to be like this. Micro ITX is going to be like this. You guys decide what's looking better. I think this one looks better, but this is more practical as I'm going to get a direct possibility of using a riser and putting up the graphic card right here. I also have one other option that I'm going to show you right now. Another thing what we can do is very skeptical, but still I prefer doing it. We have to remove this and we can switch the whole frame upside down. This is really heavy, and now we can literally just yank in the motherboard and place it right here. If we have a micro ATX, earlier we were putting it this way. Now the mini ITX can sit there and this whole place can be used as a place for the radiator. But again, I want the reservoir up here. वो इस पे नहीं हो पाएगा. This is going to be really difficult. I was trying to think to seal this off from one side and use it as a reservoir, but this thing is really dirty. Plus, I'll not be having a clear look inside when I'm using it. एक बहुत बड़ा benefit इस चीज़ का ये है कि इस पे जगह जगह स्क्रू के बहुत सारे threads हैं. You are seeing this. I have applied this. This was not
in there with the chassis. You can literally put screws at a lot of places and make a really custom mounting or some sort of bracket to mount things up. Now let me switch the chassis again. I think that looks good. You guys decide. I think ऐसे काफी cool लगेगा. And we'll put our water reservoir or coolant reservoir यहाँ पे for liquid cooling. It's going to be super easy to carry forward all the tubings and all. So I think this is going to be the frame's actual kind of shape जिस पे कि हम build करने वाले हैं. Now I have to decide between ATX and MITX. ATX आएगा यहाँ पे और mini ITX आएगा यहाँ पे, तो वो आपको decide करना है, कर लीजिए. I'll give you update of this thing in the next video. और ये वीडियोस ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूएशन में आएंगे, क्योंकि पार्ट्स आने में भी टाइम लगता है यार, थोड़ा टाइम तो लगेगा. सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल, बट जैसे जैसे आएंगे और जैसे जैसे अपना बजट अलाउ करेगा वैसे वैसे अपन बनाएंगे. आप लोग अपने सजेशन जारी रखिए. ऑल्सो इफ यू नो समवन who has some sort of AI or something like that lying around, अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो let me know, I'll be happy to buy it. अभी के लिए इतना ही. अब आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय and keep doing interesting stuff and stay awesome as always. Take care and ride safe. I'll see you in the next vlog. मोटो zoomer signing off. पैसा बहुत लग जाएगा बाबूजी, इतना पैसा लाओगे कहाँ से? Okay, bye.